सेवाएं हो, सेवा का प्रक्रम हो, या सेवा की धारिता का वह संकल्पनित भाव हो, प्रत्येक पक्ष को लेकर सीआरसी लखनऊ अपने संपूर्ण टीम के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन निरंतर आप सभी के बीच में रख रहा है, और इन सभी सेवाओं के तत्परता से आप सभी के बीच पहुंच सुनिश्चित करने और इन सभी सेवाओं को समुचित रूप में आप तक पहुंचाने का जो श्रेय है, जो निर्देशनित भाव है, वो आदरणीय श्री निदेशक श्री रमेश पांडे सर को जाता है, जिनके कुशल निर्देशन में हम सभी निरंतर अपनी पुनर्वासीय सेवाओं को, शैक्षणिक सेवाओं को, सेवाओं को आपके बीच में रख रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय निदेशक सर जुड़ चुके हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा आदरणीय निदेशक सर श्री रमेश पांडे सर को कि सर आप आए और आज के अति महत्वपूर्ण विषय स्पेशल एजुकेशन फॉर ऑटिज्म एंड अदर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज पर अपने महत्वपूर्ण भाव और अपना आशीर्वचन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर, स्पष्ट आ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण और जो आजकल के दैनिक जीवन की गतिविधियां चल रही हैं, उससे संबंधित जो डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, या दुनिया में जो WHO कहती है कि राइजिंग डिसेबिलिटीज एंड डिक्रीजिंग डिसेबिलिटीज, तो ऐसी दिव्यांगताएं जो बढ़ रही हैं, ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, उनकी विशेष शिक्षा कैसी हो, उनकी शिक्षा कैसी हो, उसकी शुरुआत कैसे हो, उसका रेडीनेस, बच्चों में शिक्षा को लेके रेडीनेस, उनका पेरेंटल रेडीनेस, और किस किस एस्पेक्ट पे, एजुकेशन के किस किस एस्पेक्ट पे बात किया जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण विषय चुनने के लिए मैं अपने सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, विकास जी, सविता शुक्ला जी, नागेश पांडे जी और भरत भूषण जी, आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज के हमारे जो इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आयोजित हो रहे वेबिनार के जो हमारी रिसोर्स पर्सन है अंतरा चौधरी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्पेशल एजुकेशन में, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। मैडम, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान और विभाग की तरफ से। जितने पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि अंतरा जी को सुनने के लिए आप सब जुड़े हुए हैं, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि लास्ट तक आप अंतरा जी को सुनने के लिए जुड़े रहें। अंतरा जी का अपना इस फील्ड में एक लंबा अनुभव रहा है, टीचर ट्रेनिंग में और रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में, और सालों से हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, और CRC के साथ भी हम लोगों का पुराना एसोसिएशन रहा है, अंतरा जी का पुराना एसोसिएशन रहा है। उनकी एक्सपर्टीज हम लोगों को लगातार मिलती रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपिक स्पेसिफिक जो भी आप लोगों के क्वेरीज होंगी उसको अंतरा जी अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंतरा जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, अपने सभी स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और सबको कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सादर धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हम सभी की प्रेरणा है। अब समय है आज के विशेषज्ञता को धारित कर हमारे बीच अपने अति महत्वपूर्ण विषय विशेषज्ञता को लेकर के उपस्थित हुई आदरणीय डॉक्टर अंतरा चौधरी मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। आदरणीय मैम, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए और आज के अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विशेषज्ञता हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय मैम। धन्यवाद। नमस्कार। कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है? हेलो, am I audible? जी मैम, जी सुनाई दे रहा है मैम, आपकी आवाज स्पष्ट है। प्लीज मैम, प्लीज। Thank you so much. So, respected Director Sir, CRC-Lucknow, Nagesh Pandey ji, Bharat Bhushan ji, and others, all other esteemed organizer and professionals in this field from CRC.
first of all, I convey my sincere thanks for inviting me in this particular in this program, and for this particular topic. It's a really very important topic to discuss. So thank you all of you for inviting me. And so without wasting much time, I also welcome all the participants here. Cordially welcome all of you. And so I just start presenting my today's topic. I just I turn off my camera. I have some network issues. To avoid that, I just turn off it. Okay. Is it visible to all of you? Is the screen visible? Yes. Yes, Okay. ma'am. Thank you so much. So today's topic for discussion is special education for autism and other pervasive developmental disorders, that is PDD in short, it's known as. And what I'm going to discuss in this 1 hour session includes the concept of PDD. Then the very important, what I was just thinking, that we have some doubts on the terminologies, what terminologies we are using. So that is what I thought we must discuss on that issue also. So Diagnostic and Statistical Manual 4 and DSM-5, how they define this PDD or autism spectrum disorder or PDD NOS. So I'll be discussing on that issue also. Then ASD, definition and characteristics. And very importantly, comorbidity with ASD. जो हम सभी को पता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होते हैं उनके साथ साथ कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस भी आते हैं, वो दिखाई देता है हम जब बच्चे को लेके काम करते हैं क्लास में या क्लिनिक में. then we used to found that comorbid conditions along with spectrum, right? And then intervention methods. As a special educator, we must know and must understand how to address those issues related to that PDD or ASD, and how to diagnose, and then the intervention process. So these are the topics what I am trying to cover in this 1 hour session. So to start with, I'm just reading one case study. Sham, he was an active and busy child, but his parents were worried about him. वो बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स वरीड क्यों है पेरेंट्स? Compared to other 3 years old, they know Sham was different. जो बच्चे, ये भी 3 साल के बच्चे हैं, बाकी जितने बच्चे हैं उनसे वो अलग है. कैसे अलग है? Was not talking. He didn't seem to want or try to play with his sister or other children. मतलब वो बात नहीं करते हैं और दूसरे बच्चों के साथ जो मतलब गेम्स या ये सब में उनके इंटरेस्ट उतना नहीं है. वो
cannot communicate with others properly. So at nursery school, Sham would not join in with other kids. But he really enjoyed playing with water. लेकिन ये देखा है कि जो शैम जो है वो पानी के साथ उनको खेलना पसंद है. He would splash and play at the sea for hours. घंटे तक वो बैठ के वो खेल सकते हैं, पानी को लेके खेल सकते हैं, with a big smile on his face. That means he likes to play with water. Right. So after a year of expressing concern to their pediatricians, Sham's parents finally obtained a referral to a psychologist who diagnosed that Sham is having pervasive developmental disorder. So now we have to see what does it mean by pervasive developmental disorder or PDD. So it's a group of neurobiological disorders that demonstrate deficit in 3 areas mainly. What are those 3 areas? One is social interaction, verbal and non-verbal communication, and repetitive behaviors or interests. So, ये जो 3 area है, वो 3 domains या area में deficit होते हैं. एक जो है that is very important, social interaction, दूसरों के साथ कैसे बात करना है, but or expressing own desire, उनको जो करना है वो बच्चों के साथ कैसे, अपने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, फिर जो अलग जो कम्युनिटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, that become a problem for them. Kindly sir, mute yourself kindly. So, verbal and non-verbal communication में problem होता है. देखिए verbal communication we all know, जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका नाम क्या है, वो बोल रहे हैं मेरा नाम सैम है. और नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो वो थ्रू जेस्चर वो कम्युनिकेट करते हैं. तो ये दोनों तरफ से ही बच्चों का प्रॉब्लम होता है. मतलब क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम इज लाइंग विद द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो, वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज रिपीटेटिव बिहेवियर. जो एक ही काम जो है बार बार जो एक ही टाइप का जो बिहेवियर वो दिखाई देता है, कोई मतलब रॉक कर रही है बैठ के, तो वो कंटिन्यूअसली ही रॉक्स. इस टाइप के repetitive behaviors is found. Now, if we see the term PDD, means pervasive developmental disorder, अब अगर ये देखिए pervasive developmental disorder के अंडर में वो अगर क्लासिफाई करते हैं तो 5 टाइप्स है इसमें. एक है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एक है PDD NOS, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. ये बोलते हैं pervasive developmental disorders not otherwise specified. Then there is Asperger's syndrome, Rett's disorder and childhood degenerative disorder. तो ये जो होता है इसमें से देखिए आप कि ये अलग से इसको देखा, मतलब अलग से एक अम्ब्रेला दिखाया है इसमें, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर में ये तीनों को लाया गया, लाइक ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, देन PDD NOS एंड Asperger's syndrome. Now if we see, अब देखिए इसमें से जो ये 2 है, Rett's disorder and the other one, both are very rare. कॉमनली जितने बच्चे हम देखते हैं उसमें से ज्यादातर ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, PDD NOS एंड Asperger's syndrome ज्यादा हम देखते हैं. नाउ इफ वी सी दैट DSM-4 एंड DSM-5, DSM-4, according to DSM-4, this pervasive developmental disorder has been defined and classified by these 5 categories that I already discussed. And
in DSM-5, these three categories comes under this ASD, that is Autism Spectrum Disorder. And if we see the characteristics, like for us, in case of autism, they have social delays है उनको, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव और रिपीटेटिव बिहेवियर है, जो पहले भी हमने अभी डिस्कस किया था. वी हैव दैट they have deficit in 3 areas, like social delays है, language है, repetitive behavior we can observe. And in case of Asperger's, there is social delays, obsessive repetitive behavior, language का इतना problem नहीं is. Then when it comes to, as per DSM-5 ASD, so social interaction and social communication, there is a major issues with these 2 areas, like social interaction, social communication. ये दोनों में ही problem होते हैं. And along with that, restricted repetitive patterns of behavior, interest or activities. तो इसमें देखिए जो होता है वो इनके कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर को हमने बताया अभी, और बहुत रिजिडिटी रहते हैं बच्चों में, लाइक एक रूटीन में. अगर उनके वो मतलब कोई उनके फिक्स्ड एक प्लेस है, सिटिंग प्लेस है, तो इफ यू चेंज दैट सिटिंग प्लेस, दैट चाइल्ड विल इमीडिएटली स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द क्लासरूम. तो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन देम, राइट. तो फिर सेंसरी इश्यूज जो होते हैं, देखिए सेंसरी इश्यूज में जो आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्टिकी चीजें पसंद नहीं. अगर आप कुछ उनको सिखा रहे हो क्लास में, मान लीजिए आप कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज में, आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ सिखा रहे हैं, तो आपको आप जो उसमें आप अगर देखिए तो वो कलर जो है वो टच नहीं करना चाहेंगे. आप अगर चाहते हो कि उसको थंब पेंटिंग से कुछ सिखाओगे, तो the child may not like to use those colors directly, that touching that color, that child may not like. So these kind of sensory issues you may observe in a child. So as we are discussing that, when we are saying autism spectrum disorder, ये spectrum है, जो मतलब क्या है, देखिए umbrella, इसीलिए ना it has been denoted by umbrella. तो एक जैसे छतरी जैसे है, उसके अंडर में जो है ना बहुत सारे behaviors we can observe. So that may be impaired social interaction, that may be impaired communication, that may be restricted or repetitive stereotype behavior. Could be. Now this is a very common picture I have taken from Google, definitely. So autism spectrum disorder, when we are saying autism, so see, very interestingly it's written, always unique, totally interesting, sometimes mysterious. तो autism को ऐसे वो define किया है. So let us see what does it mean by autism. The autism is a neurodevelopmental disorder characterized by impaired social interaction, verbal and non-verbal communication, and restricted and repetitive behavior. तो क्या देखिए आप, क्या दिख रहा है इसका? ऑटिज्म जो बोल रहे हैं वो एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. It has been characterized by impaired social interaction. अभी हमने बताया कि जो एक दूसरे के साथ कैसे बात करना
मतलब बात करना, ये सब जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, सभी में उनको प्रॉब्लम होती है. एंड देन रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. तो आप देखिए, द वेरी अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या दिखते हैं? डज नॉट babble, point or make meaningful gesture by 1 year of age. जो बच्चे को अगर हम नाम से बोलते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, आप बच्चों को, तो वो आपके तरफ देखते हैं. तो इन केस ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड, इन केस ऑफ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, तो वो अगर आप उनके नाम से बोलो तो he may not respond to you, rather than वो अपने जो वर्ल्ड है, अपने जो उसमें वो इन्वॉल्व होते रहते हैं. तो आप कुछ खेलते हैं तो उसी को लेके खेलते रहते हैं. तो that way, that can be the triggered sign for the parents to identify his child with autism, right? Now, if we see, that does not speak one word by 16 months. जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है, वो माइलस्टोन भी डिले होते हैं फॉर चिल्ड्रन विथ ASD. तो वो डेवलपमेंटल डिलेज रहते हैं. जो वर्ड्स बोलना चाहिए जिन साल में, 2 साल में, तो वो नहीं कर सकते हैं. रेस्पॉन्ड टू नेम, डज नॉट रेस्पॉन्ड टू नेम. जो आप नाम से बोलिए तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा. loses language और social skills. जो social skills है, language जो होता है, वो भी at par other children, it was not developed. So it is known as this autism triad, which means there are 3 main areas where we found deficit, where those areas are lack of socialization, lack of communication, lack of flexibility. तो देखिए, lack of socialization का मतलब क्या है? lack of socialization का मतलब है कि don't know how to behave in a particular situation. अगर आप कोई वेडिंग में जा रहे हो या कोई हैप्पी मोमेंट है, तो हाउ टू रिएक्ट इन दैट मोमेंट, एंड इन अ सैड मोमेंट, तो हाउ टू रिएक्ट इन दैट मोमेंट. तो दैट मे नॉट बी, देयर इज अ लैक वी कैन सी. देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वी हैव ऑलरेडी सेड. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब देखिए, अगर हम बहुत सिंपली हम बोलते हैं कि कोई मान लीजिए, we started with Sam. So when Sam is going to school, what happened? The first day, Sam, जो टीचर है, उन्होंने सैम को फर्स्ट बेंच पे बिठाया, कॉर्नर से. So Sam was used to sit on that particular बेंच. जब भी वो स्कूल में आते हैं तो वही जो कॉर्नर सीट है वो उनके लिए वही वो बैठते हैं. लेकिन ऐसा एक दिन मान लीजिए ऐसे हुए है कि वो सीट उनको नहीं मिला, तो दूसरी सीट में उनको बैठना पड़ा. Then what happened? Sam immediately started disturbing the class. तो टीचर को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है सैम, इतने ऐसे क्यों कर रहे हैं. बट द थिंग इज, he is not able to accept that change of place. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यूज रहते हैं. ओके, सो see, at a glance, if we see top early signs of autism, it includes delayed speech development, spin objects. ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में, जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, यू कैन से. कोई भी है, एक आप कार्ड दे दीजिए जो
खिलौना जो होता है ना बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, उसका जो व्हील्स होता है ना कार के, उसी को लेके पड़े रहते हैं, है ना। वो व्हील्स को ही लेके, मतलब उसी, वो पूरे कार के ऊपर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ व्हील्स के ऊपर उनके इंटरेस्ट स्टिक हो रहते हैं. So that kind of things, they are more interested in a particular object rather than many toys. Prefer to play alone. Because we have already discussed that they have severe problem in communication, socialization. So definitely they prefer to play alone, hyperactivity, sleep problems sometimes, rejecting cuddles. So these are some of the early signs can be observed in a child with autism. We have already discussed what is ASD. So ASD or autism spectrum disorder, when we are saying, so we can say it's not a single disorder, but a spectrum of closely related disorders with a shared core of symptom. देखिए, ये कोई एक कि उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं. इसीलिए क्या होता है, देयर आर मेनी क्लोजली रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैन बी ऑब्जर्व, सो इट्स नोन एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स. एसोसिएटेड बहुत कुछ होता है, हाइपर एक्टिविटी रहते हैं, लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, समटाइम्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी आते हैं. So these are all closely related. Then every individual on the autism spectrum has problems to some degree with social skills, empathy, communication and flexible behavior. So ये तो we have already discussed कि social skills के problem होते हैं, empathy तो प्रॉब्लम होती है उनको, कम्युनिकेशन का एंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर, जो ऑटिज्म ट्रायड में भी इसी के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन इट ऑकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी डेवलपमेंटल पीरियड का मतलब क्या है? कोई भी आप में से अनम्यूट करके. डेवलपमेंटल पीरियड, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आप सबको? Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. हाँ. Could you please repeat, madam? Development period is around 5 to 6 years. Developmental period. You are partially right, ma'am. Actually, developmental period. Anyone of you, any other participant want to say anything about the developmental period? कोई और आप में से बोलना चाहते हैं डेवलपमेंटल पीरियड के बारे में, और मतलब पीरियड के मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या है? मैडम आप पार्शियली राइट है, मैंने पहले ही कहा आपको. पीरियड हम जो मानते हैं वो 5 to 7 years तक मानते हैं, और इसमें बच्चा डेवलप हो रहा होता है हर तरह से, इसीलिए डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं. हाँ मैडम, एक्चुअली 5 साल तक जो होता है उनके सबसे फास्ट होता है डेवलपमेंट, जो इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो बच्चे हैं उनको मतलब आप सिखाओ, कुछ सिखाओ तो अर्ली एजेस में सिखाओ, देन ही विल बी एबल टू ग्रास्प इट इजीली एंड फास्ट इट विल बी. तो वो डेवलपमेंट जो होता है बहुत फास्ट होता है, बाद में वो डेवलपमेंट हर तरह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उतना फास्ट नहीं होता है जो जितने पूरी तरह से डेवलपमेंट वो 5-6 साल तक होता है. लेकिन जब हम बोलते हैं कि डेवलपमेंटल पीरियड, then it means from the inception of fetus to 18 years up. 18 साल तक का हम बोलते हैं कि डेवलपमेंटल जो पीरियड होता है, तो ये डेवलपमेंटल पीरियड हम बोलते हैं उसको. ठीक है. They may not necessarily lack skills, but their skills may not develop age appropriately and may be uneven development. Proper development नहीं होता है. Age appropriate जो we know the milestone, developmental milestone we all know,
कि जो सोशल डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होता है, मोटो डेवलपमेंटल कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मे बी मोटो एंड अदर स्किल्स वेरी ओके डेवलपमेंटल, बट main issues comes with the social skill, social development, language development जो होता है उनमें उनको ज्यादा delays can be observed. Okay, so characteristics of ASD include social skills. They have problem with social interaction. They have problem with speech and language comprehension. Comprehension मतलब समझने भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं जब हम when we will be discussing on the intervention, then I'll be discussing कि वो हम बहुत सिंपल टर्म में बोल रहे हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं then it should be in a very simple term, one word, ये ऐसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, then they will be able to understand it better. Restricted behavior और play, जो play और behavior restricted होता है, साथ में देखिए exceptional skills भी होते हैं, like some children with autism have exceptional skills. कैसे exceptional skills उनको होता है, such as great memory, calendar skill, or information about countries, their capital, president, and so on, or they read way beyond their age. तो ये when I'm discussing this now, so just one example came in my mind. It's long back when I started my career. I think it's 20 years back. That time I joined in a NGO. It's a reputed NGO in Kolkata. So there I met a child. He was actually, that time he was not a child. He was above, I think, 25, 30 years old person. So I met him, and he has he's an autistic person with an exceptional skill of calendar skill, which you can say. Calendar skill का मतलब क्या है, देखिए वो बच्चे को हम पता नहीं वो कैसे बोल देते थे, when we ask them like मैंने अपना बर्थडे बोल दिया उनको कि ये डेट है, ये मेरा मतलब तारीख और जो ईयर है वो मैंने उनको बोल दिया, तो he immediately somehow he calculate and he said that okay, it was Friday ma'am, वो Friday था ना मैम. तो I was so, I mean, I was so spellbound, like how it is possible. So that is what I experienced this with the child. जो भी हम उनको बोलते थे ना, किसी भी मतलब 10 साल पहले का हो या 40 साल पहले का कुछ कोई भी डेट और ईयर हम बोल देते थे उनको, then he will immediately, मतलब वो 3, 4, 5 मिनट में वो कैसे कैलकुलेट करके वो बोल देते थे कि which day it was. So that kind of, I'm sure you must have also came in touch with that exceptional skill, child or person with that exceptional skill. हम कभी-कभी न्यूज़पेपर में भी आते हैं इस this kind of they have exceptional memory, or sometimes a child who may not write properly, may not communicate properly, but when you ask him the capital of countries across the world, he will be able to do it. He will be able to tell it immediately. So these are exceptional skills can be seen with the children with ASD also. Okay, so I've also discussed with these skills like social skills, unusual or inappropriate body language, gesture, facial expression हो सकता है, lack of interest in other people, मतलब बाकी क्या कर रहे हैं वो, मतलब मिनिमम इंटरेस्ट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी आसपास में क्या चल रहा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एलूफ होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, अपने उनके फीलिंग्स जो होते हैं, रिएक्शंस भी जो होते हैं वो भी लिमिटेड रिएक्शंस होते हैं. तो दिस
this kind of behavior can be seen. Then speech and language, when we are seeing, they may not talk. Sometimes they speak in an abnormal tone of voice. Sometimes they add some rhythm whenever they say. This kind of characteristics is found. Then the very common is repetiting words. When you are asking, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो immediately बोल रहा है तुम्हारा नाम क्या है. Like if I am saying my name, मैं अंतरा हूँ, तो वो भी बोलेंगे मैं अंतरा हूँ. तो that kind of जो सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है वो उनको एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं. तो ये भी मतलब कॉमनली वी कैन सी. रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर एंड प्ले, रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट लाइक हैंड फ्लैपिंग, कोई एक जगह बैठ के रॉक कर रहा है, स्पिनिंग, कोई भी चीज है तो वो उसको कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा है, मूविंग कॉन्स्टेंटली. देन ऑब्सेसिव अटैचमेंट टू अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में. जो क्लासरूम में हमने देखते हैं कि कोई भी एक रबर बैंड है, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको लेके वो बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है, वो उनके पास होना ही चाहिए क्लास में. और टीचर को भी बाद में क्या होता है, टीचर when teacher came to understand the child, then उनको लगता है कि ठीक है, अगर पूरी क्लास को कंट्रोल में रखना है ये पर्टिकुलर दिस चाइल्ड, तो उनको ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर उनके ऑब्सेशन है, तो वो ऑब्जेक्ट उनके हाथ में होना चाहिए. अगर नहीं है तो वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेगा. So that kind of behavior can be seen. Then a strong need for sameness, order and routine. ये जो बच्चे जैसे with autism जो बच्चे होते हैं ना, उनको this is another very important characteristics we can observe with those children, that they like to maintain a structured environment. जो एक रूटीन वर्क है, अच्छा सुबह ये उठना है, ये करना है, शेड्यूल मेंटेन करना, तो वो शेड्यूल के अगर 12 बजे उनको लंच करना है, then if you are not provide lunch at 12, that will be a problem for the child. So these are some of the behavior can be seen or observed. Then associated features supporting the diagnosis, like slow to talk or language comprehension, uneven profile of abilities, gap between intellectual and adaptive abilities. ये भी बहुत interesting है. देखिए, it's not necessarily that all ASD children with ASD have low intelligence level, low IQ. No, not at all. तो इंटेलिजेंस जो होता है, IQ लेवल हो सकता है उनके जनरल जो हम सो कॉल जो हम बोलते हैं टिपिकल चिल्ड्रन के हिसाब से उनके इंटेलेक्चुअल लेवल, IQ लेवल जो है वो नॉर्मल है, बट एडेप्टिव एबिलिटीज जो है उनमें प्रॉब्लम, सिवियर प्रॉब्लम्स देयर. सो एडेप्टिव एबिलिटीज का मतलब क्या है, जो हम अडॉप्ट करते हैं ना एनवायरनमेंट में, अपनी जो इमीडिएट जो एनवायरनमेंट है वही से हम जो अडॉप्ट करते हैं, उसमें उनका प्रॉब्लम हो सकता है. साथ में क्या होता है, सम मोटर डेफिसिट्स लाइक ऑड गेट, क्लमजीनेस, walking on tiptoes. This is another very important and observed symptom of this ASD, that those children they walk on tiptoes. Tiptoes पे वो walk करते हैं. ये बहुत common है among those children with autism. Then self-injurious behavior can be observed. They often
get anxious, depressed. So I'll be discussing on that. Now, when we see that comorbid behavior problems, क्या क्या कोमॉर्बिडिटी हो सकता है साथ में, देखिए एग्रेशन, सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर हो सकता है, देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी बहुत कॉमन है। देखिए कोई ऐसे होता है ना कि पानी से हाथ धोते रहते हैं, मतलब कोई एक चीज बार बार करते रहते हैं, सो दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। टिक्स एंड टॉरेट सिंड्रोम, ये भी एसोसिएट और कोमॉर्बिड जो कंडीशन होता है ना, उसमें ये भी आता है। टॉरेट सिंड्रोम के बारे में आप में से आप लोग इसकी मूवी देखे होंगे। तो कोई टॉरेट सिंड्रोम का जो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें वो मतलब इनवॉलेंटरी कुछ मूवमेंट उनको होता रहता है, जो मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। If you remember this movie, Hitchcock movie, you can understand it better. That tic syndrome and Tourette syndrome. Like, see the child here. I just want to show you what the child is doing. It is involuntary movement. वो मतलब उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इनके ऊपर। Then eating disorder could be observed. Anxiety disorder, time is limited, so I just want to show you this. Common phobias like loud noise. Those children with autism spectrum, they may not like loud noises. In the crowded place, they try to avoid crowded places. So some kind of anxiety created. Like, so, as I already mentioned, that if the schedule is changed, then also they become anxious. Obsessive compulsive disorder we have already mentioned. Social anxiety. This is another very interesting. See, as we already mentioned, that these children, they have delay in communication skill. They have problem issues with the language skills. So definitely they suffer with social anxiety. Social anxiety का मतलब क्या होता है, देखिए कोई अगर क्लास स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, एक बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता है, और बच्चे हैं क्लास में एंड ही इज नॉट एबल टू मिक्स अप विद दोस चिल्ड्रन, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो इट इज लाइक इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कोप इन द सिचुएशन, क्लासरूम सिचुएशन। तो उनको एक एंजाइटी होता है, सोशल एंजाइटी। ऐसा नहीं है कि एज आई एम सेइंग ना, ये जो भी हम बोल रहे हैं, दिस आर ऑल कोमॉर्बिड कंडीशंस अलोंग विद एज्ड। लाइक जो हमारे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें अगर वो एज्ड नहीं भी है, उनको भी ये सोशल एंजाइटीज होते हैं। जैसे लाइक कोई नए जगह हम जाते हैं तो वे लाइक अरे कोई नहीं है साथ में। मान लीजिए फॉर अस, वी आर द प्रोफेशनल्स, when we have to attend a program anywhere, we have to go and attend physically. तो अभी हम 2 साल या 2.5 साल हो गए, हम लोग ऑनलाइन जो वर्चुअली हम लोग बहुत इजीली वी कोप अप विद दिस वर्चुअल सिचुएशन, राइट। तो अगर आज आपको बोल रहे कि you have to go to the particular place and you have to attend physically, so I'm sure that some of us at least will think, अरे फिर से जाना होगा, वो पता नहीं कौन कौन होगा वहाँ, सारा दिन बैठ के क्या सुनना है। तो that kind of कोई नहीं होगा मेरा, मुझे अकेले जाना है, एटलीस्ट मेरी जो कॉलीग है उनको तो भेज सकते थे साथ में, होता है ना हम सब में से। तो that kind of social anxiety even sometimes we also face, right? Attention deficit hyperactivity disorder, I'm not going to discuss on it. We all know the characteristics of ADHD. So that can be one comorbid
condition with ASD, which is very commonly observed in the children with ASD. Then depression. Depression comes when we cannot talk with with others, we cannot express ourselves properly, we cannot express our feelings. So then comes that depression also. So sometimes this person with ASD, they suffer with this depression. Then lastly, we'll be discussing on the intervention methods for children with ASD, how to handle this children in the classroom, and how to guide our parents regarding the same. So there are many methods. Some instructional approaches are there: classroom management, communication development, and teaching social skills. These are some of the intervention methods what we are using commonly. तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें. Okay, so instructional approaches, which includes task analysis. We all know what is task analysis, and we are practicing in our own field also. Then visual approaches, जो भी है मतलब visually present करना उसको. डेटा कलेक्शन, हम डेटा कलेक्ट करते हैं बच्चों को क्या क्या पसंद है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लेके देन एनालिसिस करके अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर द इंटरवेंशन प्रोसेस. देन reinforcement is very important, one of the important strategy. Appropriate materials, using appropriate materials, like even for reinforcement also. देखिए, if I like chocolate, so if you give me chocolate, I'll be reinforced. But maybe you may not like chocolate. So when the teacher gives you chocolate, you may not be so much motivated. So appropriate materials for the reinforcement is important. Even what we are teaching them, what we are planning to teach. So the materials, that also we have to choose correctly. Okay. Then appropriate level of task difficulty level of task. जैसे देखिए, हम अगर जब लेसन प्लान हम लिखते थे, in that time also हम we used to write specific objective, वो भी लेवल स्पेसिफिक करते थे हम. कुछ बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं आफ्टर द टीचिंग, कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिकल प्रॉम्प्ट की जरूरत है. तो that way task difficulty, level of task difficulty we have to think of. Simple oral instruction, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो बच्चे कॉम्प्लेक्स कोई इंस्ट्रक्शन आप देते हो तो it will not be able to understood by the child. This is not very easy to understand. So instead you can just say, okay, come, मेरे पास आओ. अगर आप बोल रही हो कि अच्छा आप पहले बैग से पेन लो, अपना क्लास वर्क कॉपी लो, फिर मेरे पास आओ, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया. Then we have to make it, we have to break that instructions, right? और concrete examples, जो भी है, whatever we are going to teach, we need to provide some concrete examples. Like if we are teaching the concept of Sunday, so we must, Sunday is a concept, it's an abstract concept. So how to make it a concrete, with concrete example, like Sunday है, आज छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है, आज पापा घर पे है, तो आज हम घूमने जाएंगे शाम को. तो this kind of examples, when we are giving the child, that means we are giving some concrete examples for a abstract concept. Then classroom management,
क्लासरूम मैनेजमेंट पहले कहा था कि स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। विजुअल शेड्यूल जो है, ये देखिए विजुअल शेड्यूल कैसे हम बनाते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, ये माय मॉर्निंग शेड्यूल क्या होता है टिल स्कूल। तो पहले उठना है, फिर बेड से ड्रेस्ड होना है, ब्रेकफास्ट लेना है, मेडिसिन लेना है, मेरा बैग लेना है, फिर स्कूल के लिए निकलना है। तो अगर हम पिक्टोरियल शेड्यूल दे देते हैं बच्चों को, देन it will be easy for the child to follow that schedule. Communication also, oral communication, simple instructions would be given. Social skill के लिए भी ऐसे है। फिर educational therapy जो है, इसमें थोड़ा सा मैं just I'm at the end of my presentation actually. So it includes applied behavior analysis. ये एक जो है, we all know that it takes 1 hour or more than 1 hour session. So I'm not going to discuss on each and every one. Just I just tell you that what are the educational therapy methods can be taken. Then teach. That is another very important method, treatment and education of autistic and related communication handicapped children. ये जो है ना, इसमें भी हम स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड यूज करते हैं, जिसमें शेड्यूल हो सकता है, विजुअल टीचिंग मेथड्स दे सकते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। तो ये सब इसके टेक्निक्स जो है ये होते हैं। देन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जो सेंसरी हर सेंस को एक साथ लेके हम उसको कुछ सिखाते हैं। तो sensory integration therapy is also very useful for those kind of children. Then there is picture exchange communication system. Like as we all know that communication is a big problem for those children. तो अगर वो picture के through communicate करे, तो that will be much easy for the child to communicate. कोई भी वर्बल या जेस्चरल वो नहीं चाहिए। अब पिक्चर है, वो पिक्चर दिखा के आप कम्युनिकेट करो। आपको पानी पीना है तो आप पानी का ग्लास ऑफ वाटर का पिक्चर दिखाओ। तो that way the child may start communicating. So then sign language is another important strategy. Visual strategies are there. So like and there is curricular adaptations are there. There are 9 types of curricular adaptation that also can be incorporated when they come for the regular classes. Okay, so these things like the time allotted should be given, more time, support को ज़्यादा support देना है। कुछ ऐसे चीज जो है उनका मतलब थोड़ा सा कम सिलेबस का जो है उसमें से थोड़ा सा उनको साइज जो है उसमें थोड़ा जो लर्निंग एक्सपेक्टेशन आउटकम जो है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। तो दैट काइंड ऑफ adaptations can be done. And now it's time at the very end of this session. This is my last PPT, and throughout this 1 hour we're just discussing on the ASD, person with ASD, what are the problems they are facing, and how we as a special educators we can address or we can intervene those children with autism spectrum disorder. Now it's time to celebrate their is not possible. So there is Pranav Bakshi from Delhi. He is a 19-year-old boy who recently made headlines by becoming India's first model with autism. So you can anytime Google it for Pranav. So he is a person with ASD. Again, if you look into this person, he is with his mother. He is Chennai-based Prem Shankar who builds website. He also diagnosed as ASD at the age of 5. And as we all know, there are Albert Einstein who was having
ASD, Isaac Newton. So these are the we can see कि अगर बच्चों को ASD है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वो. He needs our empathy, parental support. So we are here to do the support. So this is what I just want to end my session with this quote, that I do not suffer from autism, but I do suffer from the way you treat me. So thank you for your patience hearing. I think I just stop sharing. आप लोगों को कुछ पूछना है तो you can ask me. Let me just. अगर किन्हीं प्रतिभागियों का कोई प्रश्न हो तो प्लीज मैम के समक्ष रखें. सर मिस्टर भूषण अगर कोई सवाल नहीं पूछता तो मैं एप्रिसिएशन के 2 वर्ड्स कह दूं. मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको बोलूं. Yes, ma'am. अगर आपकी परमिशन हो. यस प्लीज. Yes, ma'am. Please, ma'am. Please, ma'am. मैम अंतरा जी, आपका ये आज सुन के मैंने आज तक बहुत ज्यादा वेबिनार अटेंड करे हैं, बिकॉज आई एम अ काउंसलर. बहुत ज्यादा करे हैं, लेकिन द फर्स्ट पर्सन जिनमें मैंने पेशेंस देखी एज अ टीचर, कैसे समझाना है और सारा शुरू से एंड तक. बहुत मैंने ऑटिज्म पर भी सुने हैं लेक्चर्स, लेकिन आज पहली बार है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑटिज्म मुझे समझ आई है. सो नाइस. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. हिंदुस्तान को इस तरह से आपकी तरह पढ़ाने लग पाए तो फिर मैं कभी नहीं सोचूंगी कि कोई बच्चा पीछे रह सकता है. I've been a teacher, so I know teachers also. Sure, ma'am. बहुत अच्छा है. This is really inspiring, ma'am. Your words means a lot. Thank you so much. So nice. Thank you so much. Thank you. That it's really great that at this you are also listening throughout the 1-year session. You are there, present, and listening to it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Nice to meet you, ma'am. First time I followed it so well. Thank you. Thank you so much. आज के हाँ भरत जी बोलिए. नमस्कार भरत जी बोलिए. इस कार्यक्रम स्पेशल एजुकेशन फॉर ऑटिस्ट एंड अदर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वेबिनार में मैं CRC लखनऊ परिवार की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में एक बृहद उद्बोधन प्रदान कर रहे हम सभी को आह्लादित करने हेतु आदरणीय डॉक्टर अंतरा चौधरी मैम, आपको बहुत बहुत आभार. निश्चित ही आज का आपका उद्बोधन अत्यंत ही ज्ञानवर्धक रहा. मैं आदरणीय डॉक्टर अंतरा चौधरी मैम का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार सर, आप सभी को धन्यवाद. एंड आई मस्ट से they are very good participants, and thank you all the participants for your patience hearing, listening, and also thanks to the organizer of CRC-Lucknow for believing in me and giving me this opportunity to interact with your all participants. Thank you so much. Thank you so much, sir. ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं उन सभी